और बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में धमाका हुआ है। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन खड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर, जिसमें धमाका हुआ है। गुवाहाटी एक्सप्रेस थी वो, जिस पर धमाका हुआ है कि बोगी में 2 धमाके हुए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन की, जहां पर गुवाहाटी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर खड़ी थी, जिस पर धमाका हुआ है। आप देख सकते हैं यहां पर लोगों की तादाद बढ़ रही है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। और साथ ही आप इन तस्वीरों में ये भी देख सकते हैं पुलिस सिक्योरिटी यहां पर बहुत ज्यादा टाइट कर दी गई है। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई गुवाहाटी एक्सप्रेस में धमाका हुआ। अभी तक 11 लोगों के घायल होने की खबर आ चुकी है। एक महिला की मौत हो गई है इस धमाके में, लेकिन क्या कुछ वजह रही, क्या कारण थे इन धमाकों के, उसका भी पता नहीं लग पाया। लेकिन अब आपको बता दें कि कुछ देर पहले हमने भारतीय रेल के प्रवक्ता से बात करी थी, अनिल सक्सेना से। आइए उन्होंने क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं। अभी जो प्राथमिक सूचना हमें मुख्यालय तक पहुंची है, उसके हिसाब से ये 12509 बेंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस से जुड़ा हुआ मामला है, जो वाया चेन्नई चलती है। ये लगभग सुबह 7:05 पर चेन्नई आई थी और इसके बाद जब प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर ये पहुंची तो वहाँ S4 और S5 कोचेस में इस ब्लास्ट की खबर है। और उसमें जो हमारे पास अभी सूचना है, एक लेडी पैसेंजर जो है शी सकम टू हर इंजरीज, और बाकी 11 लोग और घायल हुए हैं, जिनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमने एडमिट कराया है। अभी हमारी प्राथमिकता यही है कि हम घायलों को उचित उपचार दें और स्थिति को समझने की कोशिश करें। हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो सूचना जैसी मिली है वहाँ स्टेशन पे पहुंच रहे हैं, और कुछ पहुंच गए हैं और कुछ और पहुंच रहे हैं। जी अनिल जी, हादसा कब हुआ है? यात्रियों के नीचे उतरते हुए हादसा हुआ है? अब ये मैंने कहा ना, बहुत ये फाइनल डिटेल्स हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एग्जैक्टली आए कि वो, लेकिन ये हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे आने के बाद हुआ है। और तो अब देखते हैं उसको एग्जैक्टली क्या डिटेल्स हैं। अभी आपको थोड़ा सा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए। लेकिन स्थिति यह है कि इस वक्त हम उपचार के लिए हमने घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया है, और वरिष्ठ अधिकारी हमारे वहां पहुंच गए हैं और स्थिति का पूरा हम जायजा लेना और कंट्रोल लेने की और बाकी जो व्यवस्थाएं करने की कोशिश कर रहे हैं। जी शुक्रिया अनिल जी। Train in another, say, 1 hour or so. We are hoping to start the train in 1 hour. The civil police is already on the job. They are checking up the remaining coaches. Has this resulted in setback in operation of the other trains? No, mercifully, because the train had already come into Chennai, the other trains are moving as normal, but this is the one which is now having to be investigated by the civil police. So there will be no regulation or cancellation of services today? No. It is a minor intensity bomb blast. The bottom of the seat has suffered damage. Unfortunately, this lady happened to be on that seat itself, so she, poor thing, has lost her life. But otherwise, it was fortunately a very minor bomb blast. Any clue on what kind of a device? It is difficult to say right now what kind of device it was and what triggered it off. Whether luggage was placed? It is difficult to say. It was placed under the seats in both instances. So the type of device and how it was triggered off, etc., is only investigation will tell. Blast took place when the train was coming. No, it had come to a halt here at Chennai for about 10 minutes. Then it occurred. It was from Bangalore to Guwahati. Bangalore to Guwahati train. The timing was to trigger a blast at Chennai Central. One cannot say that, but then that is the conjecture. Because the blast has taken place at 7 running late. It should have come at our 5:30 or 5:45. It was running late. When it reached here at 7:05, after that the blast took place. What are they saying? Any suspect? That yes, no suspect activity, etc., is the police which are investigating, and I mean after the proper investigation they'll be able to tell us. The train had been not immediately running as per schedule. You do not know. Well, 7:15 it should have crossed Guntur. Guntur. Yeah, but
then you do not know. It is all conjecture, because after all the incident has happened at Madras, so one doesn't know whether it was planted here itself or it was pre-planted. It is difficult to say at this stage. The police will investigate and only then we will let you know. One cannot say right now. It is difficult to say. The whole thing is in a mess. So let the police do their job and then we will be able to give you an answer. Any clue as to whether it was a timer or a remote triggered? It is not possible for me to say right now whether it was a remote controlled or whether it was a time bomb or what kind of bomb it was. It's not possible to say right now. I would only request that now you gentlemen can kindly proceed. There is nothing more to be known right now. Only the next news will be known only after the proper investigation by the police has been done. More than this, right now nobody can tell you. So it is the whole police machinery is here. The complete machinery is here from GRP as well as civil police and RPF with their dog squads and their bomb disposal squads. The experts are all here. So they are doing their job. They will be doing it quite thoroughly, I'm sure. And the next bulletin we can only release through our PRO. Our public relations officer will release that. Trains are frisking, checking happening in other trains as well? No, for the present we are concentrating on this train because this is the one which has had not one but two blasts. There must be some kind of an ulterior motive. Yeah, two blasts in S4 and S5. Two separate blasts have taken place. No, for the present the remaining trains are on schedule, so they are continuing, and this train also within the next 1 hour or so we should be able to push off. Any update on the condition of the two critically injured? They are not life-threatening. Okay, out of danger. They are out of danger. It is just that they have more serious injuries as compared to what a normal. Yes, the other 7 people have only minor scratches and some blood loss. So one, but the two previously injured and 7 minor injuries. That's all that there is to it. And the ex gratia payment has the Honorable Minister has already announced. So for the present, this is all that one can tell you. Kindly proceed with your reporting, and I mean just leave this place free for the police to do their work. Very much under control. No, there is no further threat as far as we can say right now. There is no further threat. तो बड़ी खबर इस समय की बता रहे हैं, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर गुवाहाटी एक्सप्रेस में 2 धमाके हुए हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हम। और बड़ी खबर, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में धमाका।